अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इसके पहले यूनिट डिसोसिएशन की एज वेल एज अदर कंडीशन ऑफ द रिस्ट। Scapular dissociation is due to the scapulohumeral ligament tear and loss of secondary restraints. ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने बात की थी कि जो प्रॉक्सिमल रो की तीन बोन्स हैं, which are also known as the intercalated bones, or because they are intercalated between the distal row and the radius. So ये तीन bones जो हैं ये एक दूसरे साथ के connected है with ligamentous, and there is no such tendon attachment on these bones, and that's why their entire stability is provided by these ligaments. And if there is any injury to these ligaments, so there will be obvious instability in the wrist. So ये दो तीन ligament bones जो है intercalated bones, which is the अगर हम लेटर से स्टार्ट करें तो स्किपाइड है, ल्यूनेट है एंड ट्रैक्वेट्रम। तो इन तीन की तीन जो है कनेक्टेड है बाय टू लिगामेंट्स। द स्किपाइड एंड ल्यूनेट दे आर कनेक्टेड विद द लिगामेंट नोन एज द स्किपाइलो-ल्यूनेट ligament, and similarly lunate and triquetrum are connected by a ligament known as the lunato-triquetral ligament, but the scapulolunate ligament that is very prone toward tear, as it is present on the thumb side, on the radial side, and when we slip and we just are falling, so through that falling and outstretched hand mechanism, we hit the ground on the thumb side, and we are these that's maybe some injury to this ligament, the scapulohumeral ligament. So scapulohumeral dissociation is due to the disruption, the rupture, the grade 3 tear of the scapulohumeral ligament tear. There is rotatory subluxation of the scapite along with this scapulohumeral tear, और बाज औकात जो है इस तरह होती है कि यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं, सराउंडिंग लिगामेंट्स, उनको भी जो है कुछ ना कुछ इंजरी जो है हो जाती है। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्किपाइड एंड ल्यूनेट, नॉर्मल डिस्टेंस जो है ये तकरीबन ये 1 to 2 mm होती है। और अगर अपर लिमिट हम ज्यादा भी थोड़ी सी अगर कह ले कि देयर इज सम relaxation among the ligament, there is no such tear, so the upper limit is 3 mm. But if the distance between the scaphoid and lunate that is more than 3 mm, then this condition is known as the scapulolunate dissociation. अगर हम examination करते हैं on the dorsal side, so there is a tubercle on the dorsal side of the radius known as the listed tubercle, और उस लिस्टेड ट्यूबरकल से सिर्फ आप जस्ट 2 और 2.5 सेंटीमीटर जो है आप डिस्टल, जस्ट उसकी डिस्टल आप वहां प्योर प्रेशर डाल ले तो आपको टेंडरनेस मिल जाएगी, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द इंडिकेशन साइन फॉर द scapulohumeral dissociation. Swelling chances है भी, and sometimes there may be no such swelling, and the positive test would be the Watson test. The most appropriate test in the scapulohumeral dissociation is the Watson test. Already हम डिस्कस कर चुके हैं वाटसन टेस्ट को, दोबारा हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करते हैं कि वाटसन टेस्ट बेसिकली आप अपने थंब के नीचे आके आपने ओलर साइड पे स्किपाइड को पाल्पेट करना है, और फिर यहाँ पे आपने डिविएशन करनी है। पहले आपने रेडियल साइड की तरफ, फिर अल्नर साइड की तरफ। तो यहाँ से जो डिविएशन के दौरान आपको पेन होती है, दैट इज एक्चुअली while pressing that scaphoid area, that is known as the Watson test. If the test causes pain or reveal dorsal movement of the scaphoid, scapulohumeral dissociation is present. So this is the thumb side, this is the scaphoid, this is the lunate, this is the triquetrum, this is the capitate. So this is the ligament, this is the scapulohumeral dissociation when there is complete rupture, disruption of this ligament known as the scapulohumeral ligament. And जब बहुत ज्यादा
उसमें सिविरिटी आ जाती है, तो इनमें ये गैप जो है ये ज्यादा हो जाती है। और उस गैप की ज्यादा होने की वजह से सम टाइम दिस कैपिटेट विच इज द लार्जेस्ट इन बोन इन दिस डिस्टल रो, ये इसकी प्रॉक्सिमल इंक्लिनेशन आती है, और एट सम टाइम इट में जस्ट इनविजिलेट इन दिस स्पेस, क्योंकि इन दोनों की जो है वाइडनिंग हो जाती है। दिस इज ए वन ऑफ द सिवियर फॉर्म। Convection radiography views may not show any abnormality as it is a ligamentous injury, as it is a sprain, and they are usually not indicated. They are not viewed, they can't be viewed on the normal radiographs. Um, but if there are some modifications, yes, like the clenched fist P view, then may reveal the gap between the scipite and lunate. Otherwise, normal P view, there will be no such dissociation, no widening of the scipite and lunate. Already हम discuss कर चुके हैं यहाँ पे. So if the space between the scipite unit is more than 3 mm or 0.1 inch, then it is the positive sign on the radiographs for the scipite unit dissociation. A lateral radiograph may show an increased polar flexion of the distal pole of the scipite and dorsiflexion of the lunate, जिसकी वजह से जो है scipite lunate एंगल जो है ये 60 से जो है ये ज्यादा होगी. नॉर्मल एंगल ऑफ द scipite lunate जो है ये it should be present between 30 degree and 60 degree. If this is less than 30 degree, तब भी कोई abnormality मौजूद है, and if the scipal unit angle is more than 60, तब भी abnormality. और ये 30 हो गए या 60, that depend on the lunate की इनकी जो इंस्टेबिलिटी है, इनकी जो सबलक्सेशन है, ये ओलर सबलक्सेशन है या ये डॉर्सल है. अगर ये डॉर्सल सबलक्स होते हैं, यानी व्हेन देयर इज ल्यूनेट डिसोसिएशन, जिससे इंस्टेबिलिटी होती है, और ल्यूनेट जो है इसकी डॉर्सल टिल्टिंग हो जाती है, तो उससे ये जो ल्यूनेट एंगल होगा ये 60 से ऊपर जाएगा. और अगर इन केस इफ देयर इज ओलर tilting up the lunate, तो फिर क्या होगा, दिस एंगल विल बी लेस देन 30. इन बोथ केसेस दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द lunate dissociation, or there is a positive sign for the carpal instability. आगे हम डिस्कस करेंगे कि what we mean by scapulolunate angle. This is the angle between the line just crossing the mid of the scaphoid and the lunate. If these tests are negative but the injury is suspected, clinical MRI is indicated. So this is actually the scapulolunate angle and the capitolunate angle. Capitolunate angle अमूमन when there is instability, so ये हमेशा जो है ये 30 डिग्री से कम होगा. नॉर्मली जो है ल्यूनेट एंगल जो है इट शुड बी लेस देन 20 डिग्री, but if this is more than 20 to 30 degree, it's still in the margin. But if it is more than 30 degree, then there is an obvious instability in the carpal. So there are three lines we can see here. One is the yellow line, which is known as the S. That is the green line, which is known as the mentioned here C, and that is the red line, which is the L. The yellow line is the scaphoid line, and this is parallel to the mid scaphoid line. अगर हम यहाँ scaphoid, this is the scaphoid, this is the lunate capitate, and this is the metatarsal, and this is the lunate. This blue one, this is the lunate. This is the radius. So अगर यहाँ पे yellow line देखिए, so this is the line which passing through the mid the central axis of the scaphoid, and this is actually parallel to that line. Similarly, C line जो है, this is the line which will pass through the mid of the capitate bone, while L जो है, that would be the line known as the lunate line, and that the line which will pass through the mid of the lunate and in the direction of the that inclination. अगर हम यहाँ पर देखें, this is normal view, this is the normal, ये जो तीनों आपको व्यू नजर है, this is the lateral view. रेडियोग्राफ इस तरह आते हैं. lateral view में अगर यहाँ पे देखें, so this is the actually the
ल्यूनेट इस तरह स्टेबल होता है, एंड we can see here the L line is almost at the straight line, almost straight. Similarly, the lunate line is here, and this is the skipped line. सो अगर हम यहाँ पे जो ल्यूनेट रेड लाइन है एंड साथ साथ जो किपिटेट लाइन है दैट ग्रीन वन, इनके दरमियान ये एंगल लेके दिस इज नोन एज द किपेटो ल्यूनेट एंगल। द किपिटेट लाइन एंड ल्यूनेट आयल यानी सी और एल सी के दरमियान जो एंगल है दिस इज लेस देन 20, जो नॉर्मल में होता है। सिमिलरली द रेड लाइन विच इज द ल्यूनेट एंड द येलो विच इज द स्किपाइड, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दिस इज नोन एज द एसएलए एंगल or the scapulolinate angle, and that should be between 30 degree to 60 degree. When there is dorsal intercalated segmental instability, अब intercalated हमने पहले डिस्कस किया कि what does it mean? Intercalated का मतलब ये होता है कि आप एक स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होती है, और इनके लेयर के दरमियान आप कोई चीज जो है डाल ले या आप वहां पे रख दे। सो यहाँ पे अगर आप देखिए ऊपर डिस्टल रो ऑफ द कार्पल डिस्टल रो है, नीचे जो है रेडियस है, और इनके दरमियान जो है ये कार्पल बोन्स द प्रॉक्सिमल रो दिस इज इंटरकलेटेड। सो दैट्स व्हाई ये जो तीन बोन्स है स्किपाइड ल्यूनेट एंड ट्राइकेट्स, दीज आर आल्सो नोन एज द इंटरकलेटेड बोन्स। तो यहाँ पे दिस इज द डॉर्सल साइड, पोस्टीरियर दिस इज द वेंट्रल साइड। सो अगर डॉर्सल टिल्ट करता है टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, so that will be called as the dorsal intercalated segmental instability. And if the lunate that tilt polarly and towards the interior, towards the palmar side, here we can see this is tilt to the interior side, so that will be called as the vesi or the polar intercalated segmental instability, while this will be known as the deci. अब डिसाई या डॉर्सल इंटरकलेटेड सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी में the angle between the scipied line and the lunate line will be more than 60, and in the other intercalated segment instability this angle will be less than 30 degrees. In both cases there will be abnormality. Similarly, if in both the dorsal and the volar intercalated segmental instability, the CLA, the capital-lunate angle will be less than 30 degree. We can see here that is less than that is more than 30 degree in both cases, while it should be less than that. लेकिन यहाँ दोनों पे it is more than 30 degree. So it means if the scapulolinate is more than 60 degree, it means there is the deci, and if the SLA is less than 30, this is the deci. In both cases, there will be segmental instability. In both cases, there may be the subsumption of the carpal ligament. In both cases, there will be rotational subluxation of the lunate. Either it is on the dorsal side, deci, or either on the volar side, the vesi. There is a specific case where there is separation of the, this is the scipied, this is the lunate, and this is the gap, which is more than 3 mm, and this is the scapulo-lunate dissociation. But if that can be a late sign, जैसे हमने discuss किया था कि sometime it may take time and up to 2 months, 3 months when there is complete separation and widening of these two bones. So if the injury is suspected and there is no such radiographical sign, there is no such widening, still there should be management जो है उसको देनी चाहिए, यानी हम at least 12 days को इसको कास्ट में डालना चाहिए, और सिमिलरली बाकी जो ट्रीटमेंट है इसी तरह इसको ट्रीट करना है जैसे देयर इज इंजरी, क्योंकि अगर इसको अनट्रीटेड जो है ये रखा जाता है सो देयर में लीड टू द मोर एंड मोर एडवर्स consequences. इस इज द साइज ऑफ स्क्यूपेलोलिनेट गैप। ये जो गैप है इसकी बात करें कि इसको असेस करना कि हाउ मच इट इज, एंड इफ दिस इज मोर देन 3 mm, it is known as the Terry Thomas sign. Terry Thomas was a comedian in the 1950s, and we can see at that time there was black and white picture, but one of his front teeth there was absent, broken. So when there is gap between the scapulolinate segment region, so that just look like that missing teeth of the upper jaw of the Terry Thomas. So one of that American
orthopedic specialists, they just requested Thierry Thomas to just allow him to use this word for the that terminology used for this condition when there is gap between the scaphoid and lunate. He proved, but with the condition that there should be a dash between the Thierry and Thomas because he don't like someone call him Thierry or Thomas. He loved his full name, so that's why there's still this condition is the name is the Thierry dash Thomas in a single word. So Thierry Thomas sign or another radiographical sign for this widening is known as the signet ring sign. What is the signet ring? Signet ring पुराने जमाने में एक जो स्टैंप होती थी तो वो इसकी जो अंगूठी होती थी अंगूठी पर उसका एक लोगो होता था और लोगो को मेल्टेड प्लास्टिक के ऊपर इस तरह रख देते थे और जिसके ऊपर वो लोगो रख जाता था दैट वाज एक स्टैंप की तरह इसको यूज किया जाता था तो जो जितने भी बड़े बड़े अथॉरिटीज होते थे पुराने जमाने में तो उनकी ये जो रिंग है ये उनकी स्टैंप होती थी एंड दैट रिंग जिसके ऊपर जो है लोगो और स्टैंप लगा हुआ दैट इज नोन एज द सिग्नेट रिंग तो चूंकि सिग्नेट रिंग में इस वहां पे लोगो होता है इसलिए उनका जो टॉप जहाँ पे उनका ये लोगो होता है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता था सो चूंकि यहाँ पे जब स्किपैलिनर डिस्ट्रीब्यूशन होती है सो देयर इज सम सब रोटेशनल सबलक्सेशन ऑफ द स्किपाइड एज वेल जिसकी वजह से ओरिएंटेशन इस तरह बन जाती है कि जो स्किपाइड ट्यूबरकल होती हैं रेडियोग्राफी दैट लुक लाइक द टॉप ऑफ द रिंग जो ट्यूबरकल होती है स्किपाइड ट्यूबरकल दैट लुक लाइक द that the top of the ring and which the entire scaphoid look like the signet ring so that's why it is known as the signet ring sign so ये दोनों जो हैं अगर प्रेजेंट है तेरिथोमस साइन एंड द सिग्नेट रिंग साइंस अगेन दीज आर द साइन ऑफ द स्किपैलिनेट instability the scaphoid signet ring sign are also known as the cortical ring sign and as the radiographical indicator of the rotatory subluxation of the scaphoid as we have discussed we can see here this is the gap present between the scaphoid and lunate. This is the triquetrum, this is the capitate, this is the hookup hamate, the triangular bone, hamate bone. And this is actually the top or look like the top of the ring. And this is known as the scaphoid cortical ring sign or the सिग्नेट रिंग साइन सिग्नेट इसको इसलिए कहते हैं कि ये सिग्नेचर से निकला है तो चूंकि वहां पे उनकी एक सिग्नेचर होती थी उनका एक लोगो होता था सो दैट इज एक्चुअली नोन एज द सिग्नेट साइन again we can see here this is the top of that ring this is the scaphoid and this sign is actually known as the signet ring sign and this is actually Thierry Thomas sign so that just looking like this is the scaphoid and this is the lunate and this is that gap between the two bones. These are some other cases, radiographic cases. इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे we don't have such space यानी तेरिथोमस sign तो नहीं है but we clearly have the signet ring sign. This is the top of the that ring. Similarly, in this we can hear this is that signet ring sign and this is the teratoma sign, the increased space between the lunate and scaphoid. Again, we can see here this is there is space between, but not more as compared to this one. There is this space between the two bones, and there is no such signet ring sign. When there is a severe case तो क्या हो जाता है there is proximal migration क्योंकि यहाँ पर gap increase हो जाता है so जो capitate होता है ये proximal migrate हो जाता है इसकी वजह से space between the scaphoid and the radial articular surface that is disappear and this is known as the obliteration of the radiocarpal joint. Similarly, there is some subluxation of the lunate as well. If we look at the lunate, this is being subluxed normally. इसका जो ये medial side होता है, this is at the almost at the end of the radius medial side. But we can see here that up of the lunate, this is just outside the region of that particular surface of the radius.
This is the severe case known as the Slake condition, where skipper urinate advanced collapse, जहाँ पे स्पेस इतना इंक्रीज हो गया है कि स्किफाइड जो है और ल्यूनेट ये इनकी जो फिल्ट्रेशन तो हो गई है, साथ साथ कैपिटेट completely invigilate in the space between them, and there is complete collapse of this radiocarbon giant or the radius and the skiphide unit. So this is actually known as when there is severe case of that stimulated situation where there is proximal migration of the capitate towards the radial articular surface. This is the MRI of a person having that scapulohumeral dissociation, and this scapulohumeral dissociation, this is also known as the scapulohumeral internal diastasis. Diastasis is इसलिए कहते हैं कि there is widening, opening of the space. So this is the capitate, this is the scaphoid, this is the lunate, and this space, which is in this case, this is 4.2 mm. This A is 4.2 mm, which is more than 0.1 inch or more than 3 inch. यानी अगर हम 3 millimeter को, this is equal to 0.1 mm, but that is 0.14 inch, which is more than that norm. So that is again a positive sign for the scapulohumeral dissociation. About that, towards the next condition, the subacute onset and the chronic wrist pain, ये depend करता है कि what is actually the direction of pain, किस direction में pain है. This is radial side पर पेन है, ulnar side पर पेन है, dorsal side पर पेन है, या polar side पर पेन है. तो सबसे important ये है कि वहां पे हम सबसे पहले तो लोकेशन ऑफ द रिस्ट पेन जो है ये हम मालूम करें, क्योंकि ये हमारी जो डायग्नोसिस है उस पर हेल्प करेंगे, क्योंकि मल्टीपल काजेज ऐसे हैं, दे आर नोन किस डायरेक्शन में पेन है. दैट इज वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द डॉर्सल wrist pain condition, list of the condition which will give the ulnar side pain, list of condition which will give the ulnar side pain, and list of condition which will give the pain on the radial side. So usually if there is ganglion is present, you will discuss the ganglion, the intersection syndrome in the upcoming sessions. If there is Kinborg disease, so Kinborg disease means there is the areas for necrosis of the lunate. These all will give the dorsal pain. Similarly, if this is there is dorsal impingement of the dorsal polar lunate and radial distal the main impingement होती है. ज़्यादातर when there is hyper extension, तो इस उन players में ज़्यादा होती हैं जो hyper extension ज़्यादा करते हैं, especially in gymnast. Similarly, if there is entrapment of the posterior interosseous nerve, तो ये भी जो है dorsal pain जो है दे देगा wrist pain. Posterior interosseous nerve, which is a deep motor branch of the radial nerve, और ये ऊपर जो है on the posterior side की supinator muscle जो है ये उसके अंदर जो है insert ये होता है, यानी ये वो inside the supinator muscle through an opening, एक anatomical structure, और ये आप इस तरह कह सकते हैं कि एक arch होता है जो supinator muscle में होता है, जिसमें जो डीप ब्रांच ऑफ दिस रेडियल नर्व, जिसको अभी हमने कहा कि पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व, ये उस मसल से पास होता है, एंड दैट arch, that point in the supinator muscle where this posterior interosseous nerve passes is known as the arcade of the Froese. अब ये फ्रोजे उसको इसलिए कहते हैं कि ये एक जर्मन एनाटोमिस्ट था, उसने पहली दफा इसको डिस्क्राइब किया था. सो दैट्स व्हाई दिस एरिया, दिस साइट इज नोन एज द आर्केड ऑफ द फ्रोजे. अब होता ये तकरीबन 30 से 50% लोगों में ये जो ओपनिंग है जहां पे सुपिनेटर मसल में ये इनकी जो प्रॉक्सिमल बॉर्डर होते हैं में, जब ये नर्व एंटर होता है तो इनकी थिकनिंग होती है, फिब्रोसिस होती है, जहां पर इसकी एंट्रैपमेंट होती है. सो दैट इज आल्सो नोन एज द posterior interosseous nerve entrapment. Similarly, if there is inflammatory arthropathy, degenerative joint disease, extensor carpi ulnaris tendinopathy, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन ECU, जिसको सिंपल कहा जाता है ECU प्रॉब्लम या इंसिनो टेंडिनोपैथी. मोस्टली इस तरह होता है कि ये जो एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस होता है,
This is the sixth compartment of the posterior muscles. जो extensor of the wrist है या posterior muscle है on the back side of the wrist, they are divided into six compartments because of the grooves in the that radius and ulna. So they can be divided into different compartments. Each compartment may contain either two or single muscle. So the last two among these uh, six compartments, three compartments that contain a single muscle and three compartments contain two muscles. So the last two, the fifth and sixth, they contain single tendon in that compartment. And one of them is this extensor carpi ulnaris. So extensor carpi ulnaris जो है इनकी अपनी एक शीत होती है. So जब उस शीत की रप्चर हो जाती हैं, सो वहां से ये ईसीयू जो है टेंडन, ईसीयू टेंडन, द एक्सटेंसिव कार्पल अल्नारिस टेंडन, ये बाहर आ जाती है, जिसकी फिर थ्री टाइप्स है. खैर उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये टेंडनापति जो है ये एक्चुअली होता है टेनोसाइनोवाइटिस. यानी सबसे पहले शीट जो है उसकी रप्चर होती है, उसके बाद टेंडन सबलक्स होता है. सो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस सबलक्सेशन जो है, दिस इज सेकेंडरी टू द एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस टेनोसाइनोवाइटिस. और उसके बाद जो है जब ये बार बार, क्योंकि जब हम वहां पे सुपिनेशन करते हैं तो ये टेंडन अपनी गुरु से बाहर आ जाती हैं, लेकिन जैसे हम प्रोनेट करते हैं तो प्रोनेशन से ये टेंडन वापस अपनी जगह पर रिलोकेट होती हैं. तो ये शीट, सबसे पहले शीट रप्चर हो जाती है, जिसको इंफ्लेमेशन भी होती है वहां पे. सो दैट इज द टेनोसाइनोवाइटिस. उसके बाद द टेंडन विल बी सबलक्स्ड एंड दैट विल अगेन रिलोकेट. सो ये जो बार बार सबलक्स होता है, बार बार रोटेट होता है, वहां से that will lead to the ECU tendonitis. तो इसका मतलब है कि जो ECU tendonitis है, that is secondary to the ECU subluxation, and ECU subluxation is secondary to the that extensor carpi ulnaris tenosynovitis. So in all these conditions, चूंकि ये ulnar side पे है और ये थोड़ी सी posterior side पे होते हैं on the back side of the ulna, so that's why they will give the dorsal pain. Injuries to the distal radial epiphysis. Epiphysis mean जो एक होता है ग्रोथ प्लेट जहाँ पे प्रेजेंट होता है, this is known as the metaphysis. उससे proximal जो है, this is the shape of the bone which is known as और शेप से जो distal part होता है, this is known as the epiphysis. So diaphysis जो है, this is that shape होता है, फिर metaphysis होता है, फिर epiphysis होता है. तो बच्चों में अक्सर होता है कि अगर डिस्टल रेडियल एपिफाइसिस में कोई फ्रैक्चर इंजरी हो जाती है, so they will also give the tarsal pain. Similarly, the extensor pollicis longus impingement होती है on the back of the radius tubercle which is known as the Leicester tubercle. और ये Leicester tubercle एक लीवर के तौर पर काम करती हैं, क्योंकि इससे टेंडन जो है इसको एक टर्न, लॉन्ग टर्न दे देता है. अगर ये Leicester tubercle ना होता तो thumb extensor जो है that will directly just move towards the thumb side. फिर ओलर साइड पे स्किपाइड एसेप्टिक नेक्रोसिस. जिस स्किपाइड फ्रैक्चर जब हो जाती है, सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो इंटरकलेटेड बोन्स है, इनकी जो स्पेसिफिकली ल्यूनेट एंड स्किपाइड, इनकी ब्लड सप्लाई जो है ये डिस्टल से ब्रांच आके प्लाज्मा की तरफ पे ट्रेवल करता है. तो व्हेन देयर इज fracture of the scaphoid, there may be injury to this artery supplying blood to the scaphoid and as well as to the lunate. So there may be necrosis, avascular necrosis of the scaphoid. Stenosing tendinopathies. Stenosing tendinopathies is a broad term. Actually होता ये है कि जो sheath होता है जिसके अंदर tendon होता है, so there is narrowing of that sheath. जो sheath जो muscle tendon की इर्द गिर्द होती है, उस शीट की नैरोइंग होती है. दैट्स व्हाई द टर्म इज द स्टेनोसिंग. और उस शीट की वजह से उस टेंडन की मूवमेंट जो है ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने के बाद जो है देयर मे बी टेंडनाइटिस एज वेल. सो द एंटायर प्रोसेस दैट इज नोन एज द स्टेनोसिंग टेंडनोपैथीज, जिसमें टेंडन की शीट भी इन्फ्लेम हो सकती है, टेंडन खुद भी इन्फ्लेम हो सकती है, जस्ट बिकॉज द नैरोइंग ऑफ द शीट. सो दैट्स व्हाई द एंटायर ग्रुप ऑफ दिस कंडीशन, दिस इज नोन एज द stenosing tendinopathies. Flexor carpi ulnaris tendinopathy. This is the flexor on the medial side, and which is helpful in the flexion of the carpal. That tendon is on the medial side.
Flexor carpi radialis, the same wrist flexor on the radial side, on the thumb side, on the lateral side. Carpal tunnel syndrome, you already know that. The ulnar tunnel syndrome, we will discuss them in the upcoming session. The physiotracheal degenerative joint disease, though not common as the other, but it may be present. If present, they will give the ulnar pain. Avascular necrosis of the capitate, extensive polycystic lung impingement rupture. Again, it will maybe most common present in the gymnast. Now, those structures which are present on ulnar side, they will give the ulnar pain, and sometimes if there is multi-ligamentous rupture or intercarpal instability, they will give the ulnar pain. So if there is some tear or problem in the triangular fibrocartilage complex known as the TFCC, triangular fibrocartilage complex. So if there are TFCC tear, so they will give obviously ulnar pain. If there is ulnar infection syndrome, distal radio-ulnar joint instability, carpal instability, scapular dissociation, the ulnar nerve compression, we will discuss them in the upcoming sessions. Flexor carpi ulnaris tendinopathy, extensor carpi ulnaris tendinopathy, extensor carpi ulnaris subluxation, distal radio-ulnar joint infection syndrome, or the scaphoid infection syndrome. In tamam cases में that make the pain may be present on the ulnar side. Radial side pain, if there is scaphoid fracture, non-union of scaphoid fracture, decurvence, stenosynovitis, ये भी हम upcoming slides में discuss करेंगे. Scaphoid infection syndrome, intersection syndrome भी जो है scaphoid infection syndrome हम already discuss कर चुके हैं, which is actually the infection of the scaphoid along with the that this radial stellate, उनकी दरमियान जो ये infection होती है, that is actually known as the scaphoid infection syndrome. Intersection syndrome, that will be discussed in the upcoming slides. What we mean, these are the intersection, the crossing of the two compartments over each other, that is known as the intersection syndrome. Flexor carpi radialis tendinopathy, dorsal pole of the lunate impingement and distal radius, and the scapholunate dissociation. When the scapholunate dissociation is present here, it means there is a high energy trauma, और उसके साथ साथ बाकी जो ligaments है उनको भी rupture हो सकते हैं. That's why if there is dissociation of the scapholunate region, it means there may be pain in the entire wrist region. So that's why if the scapholunate dissociation is present, it will give pain both on the ulnar side and the radial side. A comprehensive and thorough history is key to the identification of the wrist and hand condition, and specifically the entire subject to examination, including both the aging factor and the aggravating factor. If the pain is after repeated movement and there is stiffness after the rest as well, so that may indicate that there may be some inflammatory condition like the tenosynovitis, like the decurvence syndrome. और अगर पेन जो है ये वेट बियरिंग एक्टिविटी के साथ जो है एग्रीवेट हो जाता है, सो इसका मतलब ये है कि जॉइंट आर्टिकुलर सरफेस और द बोन दे आर इन्वॉल्व. अगर यहाँ पे कोई क्लिकिंग ड्यूरिंग द मूवमेंट जॉइंट क्लिकिंग आ जाती है, स्पेसिफिकली इन द कार्पल साइड, so they may be situated a link with the carpal instability, the TFCC tear, or the extensor carpi ulnaris subluxation, ECU subluxation. अगर नाइट पेन भी है और साथ साथ वहां पे पेरिसीजिया या इवन पेरिसीजिया नहीं भी है, बट नाइट पेन है रिस्ट पेन में, so that is again indication of the carpal tunnel syndrome. Or similarly, if along with this wrist pain there is also the elbow and neck pain, so some remote pain from the cervical reticulopathy they may be suspected. So this is actually the condition जहाँ पे ECU tendon जो है इनकी subluxation होती है. So we can see here this is the first compartment, this is the second compartment, this is the third compartment, this is the fourth compartment, the fifth compartment, and the sixth one. अगर हम यहाँ पे देखिए, so the three, the four, the fifth and sixth compartment, they have a single tendon. So in ये जो tendon है, this is known as the ECU tendon, the extensor carpi ulnaris tendon, and these, because of these grooves on the different, on the dorsal side of the both the radius and ulna, they are divided into 6 compartments. So there are 2 types of retinaculum, just above the tendon and below the tendon. Above the tendon, this is known as the supratendinous retinaculum, and below the tendon, the
the sheath is known as the infratendinous reticulum. लेकिन इसको अगर हम देखिए इस यू का अपना एक शीत होता है दैट इज नोन एज द सब शीत, यानी एक तो इसके ऊपर जो है सुपराटेंडनस रेटिनिकुलम होता है और एक इसकी अपनी एक शीत होती है। इस शीत का सिर्फ एक फायदा ये होता है इस सब शीत का कि ये टेंडन इस ग्रूव में प्रेजेंट होता है इवन इफ, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज दैट ग्रूव एंड दिस इज द रप्चर ऑफ दैट सब शीत। तो जब हम प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं देयर इज मोमेंट ऑफ दिस ECU, तो बिकॉज ऑफ दिस सब शीट जो है दिस टेंडन रिमेन इनसाइड द ग्रूव। लेकिन जब हम सुपिनेशन एंड अल्नर डिविएशन करते हैं द टेंडन लीव्स द sheath and the groove and if there is rupture of this ECU subsheath, obviously there will be subluxation of the this tendon. So we can see that I say that the subluxation of this tendon is secondary to the rupture of the that ECU subsheath. Normally when there is a subluxation and again relocation, जिस तरह हमने कहा कि जब हम सुपिनेशन करते हैं so there will be subluxation और जब हम प्रोनेशन करेंगे तो ये टेंडन वापस अपनी ग्रूव में चला जाएगा। तो इस कमिंग आउट एंड कमिंग इन से देयर विल बी एक स्नैप साउंड भी आएगी एंड दैट एक्चुअली अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द एक्सटेंसिव कार्पी अल्नरिस सबलक्सेशन। इसके पे 3 टाइप्स है, दैट इज टाइप A, टाइप B, टाइप C, that depend on either the sheath, the subsheath is being turned or simple there is subluxation of the tendon without the turn and what is the direction of the turn. There may be some obvious ganglion on the dorsal side of the wrist, but most of the cases some of these ganglions they are not palpable and these are then known as the occult ganglion, यानी जो normally ये palpate हम उसको नहीं कसी नजर नहीं आता उसको फिर हम कहेंगे the occult ganglion. रेडियस डिलाइड यानी इस बिल्कुल इस जहाँ पे ये ganglion है इसके बिल्कुल इस साइड पर यहाँ पर swelling हो सकती है and if the swelling is present at the radius delayed area then this is the indication of the recurrent sinusitis. अगर यहाँ पे तिनार या हाइपोतिनार मसल जो है इनकी वेस्टिंग है, तो अगर तिनार मसल की वेस्टिंग है so this is the chronic stage of the median nerve compression or the carpenter syndrome, and if there is the muscle wasting of the hypothenar muscle so there may be the chronic stage, the last late stage of the ulnar nerve compression. इस तरह हमने रेडियल साइड ऑफ द लिनेट को थोड़ा सा क्लोजली एग्जामिन करना है क्योंकि if there is tendon is present so there may be indication for scapulolinate ligament sprain. At the ulnar side of linate lies the tricutroligamental ligament, वहां पर भी जो है हमने अगर टेंडननेस आ रही है so that may be lead towards the disruption of the grade 3 tier of this ligament. और अगर polar aspect of the wrist pain है तो वहां पे tuberosity of the trapezium जो है इसको आप palpate करो। ये किस तरह palpate करें? Just at the bottom of base of the thenar eminence, the bottom of the thenar eminence. Here like this is actually this is the thenar muscle and this is the bottom or the base of the thenar muscle. So this is the area here we can palpate the tuberosity of the trapezium. So if the वहां से अगर pain आ रहा है so again that may indicate that there may be some tendinopathy present there. Additional test भी हम use कर सकते हैं like the Finkelstein test which will be used for the assessing the tenosynovitis of the adductor pollicis longus and the extensor pollicis brevis. Similarly हम tenor sign use कर सकते हैं just to diagnose the carpal tunnel syndrome or the press test, the chair press test for the identification and the diagnosis of the epilepsy or the triangular fibrocartilage tear. अब अगर टेंडरनेस जो है इस टेंडन इस जगह पे जो ट्यूबरोसिटी ऑफ द ट्रेपेजियम है इससे प्रॉक्सिमल टेंडरनेस है और इस जगह पे नहीं लेकिन प्रॉक्सिमल टेंडरनेस है so that may be linked with the tendonitis of the flexor carpi radialis. और अगर इस ट्यूबरोसिटी से डिस्टल जो है वहां पे tenderness आ रही है so there may indication of the
joint problem, the ligament between the carpal metacarpal joint. The first carpal metacarpal joint or the carpal metacarpal joint of the thumb side. This is the Finkelstein test, just to detect and diagnose the decurvent disease. thumb को सबसे पहले palm के अंदर रखेंगे and then the hand, and then with flexion of the MCP and anteverging joint, I'll examine and deviate the wrist in the ulnar direction. और ulnar direction में जब इसको लेके जाएंगे, so they will be stretch of these two muscles of the thumb, and if there is a problem, if there is inflammation of the sheath between the sheath of these tendon, or there is tendonitis, in both cases they will be increased in the pain intensity. क्योंकि ये टेंडन जो है इसकी दोनों ये इस तम की तरफ आ रहे हैं, तो अगर हम इसको तम को इधर रख देते हैं, सो इट विल गिव सम स्ट्रेच, और इसके बाद फिर आप इसको अल्नर की तरफ डिवेट करते हैं, तो इट विल गिव मोर स्ट्रेच, एंड इसके और इसकी तो कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट्स को इंटरपिलेंटल जॉइंट्स को फ्लेक्स करने का मतलब भी ये है कि ये तम को वहां पे होल्ड कर सके, और होल्ड करने के बाद क्योंकि इसकी टेंडन जो है इसकी स्ट्रेचिंग होगी, which will lead to the stretching of the sheath as well, and if there is pain, so it may indicate that the sinusitis of these two tendon known as the decurvent disease or the decurvent syndrome. This is the tendon sign, just tapping over the median nerve at the wrist, producing tingling and ulceration sensation in the distribution of the median nerve. Again, this is a positive sign for the carpal tunnel syndrome. This is the pressed wrist. Already we have discussed them in detail in the examination of the wrist and hand in the start lectures. Extra-articular condition, inshallah, that will be discussed in the next session. In the second session, these will be discussed.